हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास में डिस्कस करबा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन एमएस पावर पॉइंट रो कंप्यूटर क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन जो क्वेश्चन की पूर्व वर्ष विभिन्न एग्जाम रे आसी अछि एवं आपण आगु देबा को जाउथबा विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे एथर क्वेश्चन निहाती भाबरे देखिबा को मिलबो। जदि आपण कॉन्टेक्चुअल हाई स्कूल टीचर बाय प्रिपरेशन करछंती तेबे सेथिनि मध्ये एथर क्वेश्चन निहाती भाबरे देखिबा को मिलबो। तेणु आपण वीडियो को प्रथम एंड पर्यंत देखंतु। तो देखो प्रथम क्वेश्चन, यदि आपण चैनल को प्रथम बार विजिट करछंती तेबे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तो प्रथम क्वेश्चन, which of the following application is used to create presentation? Which of the following application is used to create presentation? तो क्यों एप्लिकेशन साहाय्य में प्रेजेंटेशन क्रिएट करता हूँ? वेरी गुड, ताहा होची एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट हिजिबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटा मध्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो एटारे कोन कहला, व्हाट इज ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? व्हाट इज ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कौन? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होची प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होची माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो एठारे करेक्ट आंसर टी हिजिबो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, which of the following is called as a page to create presentation in PowerPoint? Which of the following is called as a page to create a presentation in PowerPoint? तो एठारे करेक्ट आंसर हिजिबो स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a presentation of PowerPoint the special effects used to introduce slide are known as decks। तो एठारे करेक्ट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर बी, जाकी ट्रांजिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following shortcut key is used to start the slideshow? Which of the following shortcut key is used to start the slideshow? तो slideshow start करिवार शॉर्टकट की कोटा? वेरी गुड, दैट इज F5। F5 फंक्शन के माध्यम आमे स्लाइड शो को स्टार्ट करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोन कहला, which of the following is the shortcut key to insert a new slide between the current presentation? That is Ctrl+M। एठारे करेक्ट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+M, दैट इज न्यू स्लाइड। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि। देखो, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जूम इन पावर पॉइंट इज, द मैक्सिमम परसेंट ऑफ जूम इन पावर पॉइंट इज। तो पावर पॉइंट रो मैक्सिमम परसेंट ऑफ जूम केते? दैट इज 400%। तो एठारे करेक्ट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what we have to type in the run dialog box to open PowerPoint? आमे run कमांड रे कोन टाइप करके एही पावर पॉइंट को ओपन करि परिबा? तो वेरी गुड, एटारे करेक्ट आंसर हेबो ऑप्शन नंबर डी, जाकी पावर पीएनटी। कोन? पावर पीएनटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the default standard layout in PowerPoint? Which of the following is the default standard layout in PowerPoint? तो एठारे करेक्ट आंसर हिजिबो टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड जाकी default standard layout in PowerPoint अटे। नेक्स्ट अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एहा मध्ये एग्जाम रे बहुत थोड़ा देखिबा को मिलिछि। देखो, which of the following is the shortcut key to open the exciting presentation in the PowerPoint? Which of the following is the shortcut key to open the exciting presentation in the PowerPoint? तो एक्साइटिंग प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटेशन अछि एवं सेटारे आउ न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करिवार शॉर्टकट की केउटा? तो करेक्ट आंसर हिजिबो Ctrl+O। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटा मध्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आमे एक सेशन रे टॉप 20 जाकी पूर्व वर्ष एग्जाम गुडरे बारंबार आसी से क्वेश्चन को ही डिस्कस करबा। तेनु आपण माने कंटेंट को लाइक कर दियंतु। नेक्स्ट, which of the following shortcut key is used to stop slideshow? Which of the following shortcut key is used to stop the slideshow? तो स्लाइड शो को स्टॉप करिवार शॉर्टकट की केउटा? तो स्लाइड शो को स्टॉप करिवार शॉर्टकट की होची एस्केप की। एस्केप की माध्यम में स्लाइड शो को स्टॉप करि परिबा, एस्केप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, to close the PowerPoint use Ctrl+Q। तो आमे पावर पॉइंट को क्लोज करबा पई केउ शॉर्टकट के यूज करथाउ? ता होची Ctrl+Q। तो करेक्ट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
এইটা মধ্যে एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो which of the following command in PowerPoint is used to bring the user directly to the first slide of the presentation যেটা কোন কইলা which of the following command in PowerPoint is used to bring the user directly to the first slide of the presentation तो first slide of the presentation तो correct answer हो कंट्रोल प्लस होम जहाँ मैंने प्रेजेंटेशन प्रथम स्लाइड को पलि आसी था डायरेक्टली कंट्रोल प्लस होम बटन रे नेक्स्ट which of the following command in PowerPoint is used to bring the user directly to the last slide of the presentation तो लास्ट स्लाइड रे आमे क्यों शॉर्टकट की माध्यम आमे लास्ट स्लाइड को आस्ताउ प्रेजेंटेशन रे लास्ट स्लाइड को क्यों शॉर्टकट की माध्यम आस्ताउ तो एठारे करेक्ट आंसर हेबो कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट की माध्यम रे आमे लास्ट स्लाइड को आसी थाउ प्रेजेंटेशन रे किंतु फर्स्ट स्लाइड जिते बेले आमे फर्स्ट स्लाइड को जे थाउ से समय आमे कंट्रोल प्लस होम की टाइप कर थाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो which of the following is the file extension of the PowerPoint application which of the following is the file extension of the PowerPoint application तो MS PowerPoint रो तारो एक्सटेंशन की कोटा तो .ppt होची MS PowerPoint रो फाइल एक्सटेंशन नेक्स्ट क्वेश्चन it is possible to apply the same transition on all slides in PowerPoint presentation it is possible to apply the same transition on the all slide in PowerPoint presentation तो एटा कोन कहला it is possible to apply the same transition on the all slide in PowerPoint presentation that is true next question एटा मध्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि देखो which of the following is the shortcut key for checking the spelling in PowerPoint MS PowerPoint रे स्पेलिंग चेक करिवार शॉर्टकट की केउटा वेरी गुड ताहे होची F7 एटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि तो एठारे कोन कहिला which of the following fill effects can be used to fill the background of the slide which of the following fill effect can be used to fill the background of the slide तो एठारे करेक्ट आंसर हे जिवो तो एठारे करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी पिक्चर ग्रेडियंट एवं टेक्स्ट हे जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन we can create a new presentation in PowerPoint from we can create a new presentation in PowerPoint from हमें PowerPoint माध्यम रे किपरि माध्यम रे हमें न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करथाउ देखो ब्लैंक प्रेजेंटेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन तो उभय माध्यम रे हमें न्यू प्रेजेंटेशन टी क्रिएट करथाउ तेनो एठारे करेक्ट आंसर हे जिवो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एटा आज सेशन रो लास्ट क्वेश्चन एवं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि देखो which of the following are the types of sound file which of the following are the types of sound file तो एहारो करेक्ट आंसर आपण माने कमेंट बॉक्स रे करेक्ट आंसर आपण माने कमेंट बॉक्स रे हमको बताइबे तो एहारो करेक्ट आंसर केउटा हबो ता कमेंट बॉक्स रे आपण माने टाइप करबे एवं एही पीडीएफ पई हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे जितबा टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हिजिबे किबा आपण माने जीसीएम क्लासेस सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होई परबे तो वीडियो टी को एठी एंड करछु जय हिंद वंदे मातरम।